हाय। अब हम देखेंगे कि ओपन कार्ट में जो नया पेज बनाया था उस पेज के लिए लेआउट कैसे सेट कर सकते हैं। हाउ टू सेट लेआउट फॉर न्यूली created page in Opencart. How to set layout for newly created page in Opencart. So first of all, check our new page. Our new page is BMI calculator. This is our new page. Information BMI calculator. Okay, this page is within information folder named BMI calculator. Step 1. Go to your Opencart admin dashboard and click on design and choose layout option. Wait. Okay, layout पे layouts, here is the previously created layouts named contact, default, product, sitemap, account, affiliate. You can also see here the root is affiliate / and this percentage symbol used as a wildcard. Compare, product compare, contact, information contact. Okay, to create new layout, click here, add new. Layout name is BMI calculator. And select root, add new root. Root is information, and BMI calculator. Okay, save. Refresh this page. Your layout is set. For example, if you add some additional image above the BMI calculator, here is a banner, one banner, extension, तो एक बैनर क्रिएट कर देते हैं. एक्सटेंशंस
मॉड्यूल्स ओके पहले हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं शेफ okay we add this text before BMI calculator heading go to extension modules and search HTML content okay to create new HTML content. Module name is BMI calculator text heading and content. Your heading, you put heading there and paragraph okay and then code view change status set to enable and save and go to design layout select layout BMI calculator content top select your BMI calculator text and save the layout and reload your page. Wow, great. ओके डन थैंक्स। ये हमारा एक नया जो पेज था BMI कैलकुलेटर वाला, तो उसके लिए एक लेआउट सेट कर दिया। अब इस लेआउट के अकॉर्डिंग आप इस पेज को कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन्स जैसे लेफ़्ट में कुछ चाहिए, राइट में कुछ चाहिए, या इसके बॉटम में कुछ और कंटेंट डालना है। जैसे मैं कोई इमेज डालता हूँ मैं बॉटम में, डाइट बैनर, no this is copyright, this image copyright, yes this image, save,
save. Okay, control W to close, and again go to your extension, modifications, extensions, and select modules. Amazon पे click, yeah, banner, add a new banner. Banner name BMI calculator, BMI calculator, your bottom image. Okay, width 1920, height set. First we check the height and width of this image, 1050 and 230. 1050 and 230 is height, and the enable, save. Okay, banner, and again go to design, banners, add banners. Okay, design, banner, add new banner. Banner is BMI bottom image, enable, and add image, title DIET guide plan. This is a title, link currently not available, and upload image from the system. Okay, loaded successfully. This is the banner, and save. Okay, again go to your extensions, modules. Our banner is BMI calculator bottom image, select edit, and banner BMI calculator bottom image, and save. And go to your design, layouts, newly created layout is BMI calculator, and edit. Okay, add module, banner, and save.
and reload the page. Yes. Not a good place for this panel. BMI calculator, edit, add it at bottom of page. BMI calculator. Okay, and reload. Yes. See, check. Yeah, this is the new banner which is controlled by the new created layouts. Okay, thank you. तो ये देख लिया आपने कि एक नया कैलकुलेटर जो लेआउट बनाया था BMI कैलकुलेटर, पहले एक नया पेज बनाया BMI कैलकुलेटर के नाम से, इससे प्रीवियस वीडियो में है वो, एंड आफ्टर दैट वी क्रिएट अ न्यू लेआउट कॉल्ड BMI कैलकुलेटर, and using this layout BMI calculator we control the page content. Okay, thanks.